Okay, I think everything is now fine, and you can ask any questions. So we have to start now. Bismillahirrahmanirrahim. This is actually, you don't take it serious. Lecture number 22, 21, 23. It's not important. I just made different versions of the PowerPoint and I just give its name 21, 22. So it's not really important, but the sequence is important. So this is lecture number XSX, losses in the practical switches, chapter 1, Ashfaq Ahmed. So this is chapter 1, Ashfaq Ahmed, right? And the full chapter is important. In this chapter, what we are going to study, we are going to study the practical losses in the practical switches. So you must have heard about the losses in the total circuit. For example, if this circuit is given to you, you know what is the losses in the total circuit, what is the losses in the resistor, what is the losses in the other component, and what is the total losses of the circuit. We are familiar with this, with such type of calculation, with such type of losses. But this time we don't have to calculate the losses of the entire circuit. What do you have to do? You have to only consider the losses across the switches. Where is switch? This is the switch. So the raw losses, we have to only focus this switch and we have to calculate losses. For example, if this is a transistor, so how we can find the losses? The losses is power and power is equal to VI. हम क्या करेंगे, वोल्टेज इस ट्रांजिस्टर के क्रॉस जो भी वोल्टेज होंगे उसे करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल एंड अप विद द लॉसेस वैल्यू। और अगर आपको एनर्जी मालूम करना है तो लॉसेस को आप टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल एंड अप with the energy. So what you have to do, you have to only calculate this. So you have to only calculate we have to only focus the switch, right? And the switch is okay. So what I have done here, because we have to calculate the losses, the topic is the losses in the practical switches. But in order to understand the practical switches, losses in the practical switches, I have first mentioned the losses in the ideal switches. So first is the losses in the ideal switches. What is ideal switch? Instead of a transistor, we just replace an ideal switch. Ideal switch में क्या होगा? When the switch is off, the current will be zero. Current is zero. और resistance की value कितनी हो गई? That is the infinite, because ठीक है, it's open circuit. And there are three things: resistance, current, and the voltage. हमने कहा कि जब switch, when the switch is completely off, and this is the ideal switch, so resistance will be infinite, current will be zero, and the voltage across this will be maximum, the supply voltage. And what will be the power loss across this switch? चूंकि P is equal to VI है, voltage is maximum, but the current is zero, so zero is multiplied by the maximum voltage, and the power loss will be zero. So what we understand, the losses in the ideal switches is zero normally, because this is ideal switch. अगर ये ideal switch में losses zero नहीं होंगे, इसका मतलब वो ideal नहीं है. So just for the simplicity, आप क्या करेंगे कि इस स्विच ऑफ आप वो निकालेंगे, वो P is equal to VI. वोल्टेज कितना है यहाँ पर? सप्लाई वोल्टेज है, दिस सप्लाई वोल्टेज VS है, करंट कितना है? जीरो है, losses will be zero. Losses is just the calculation of the power across the switch. बस ये ठीक है ना? Losses is basically what? So now for the on state, remember this is only for the ideal switches.
For the on state, what happens on state में हमें पता है कि switch is a conductor, resistance की वैल्यू 0 है, voltage जब resistance 0 है तो voltage भी 0 है यहाँ पर, and the current is maximum. जो भी सर्किट का करंट होगा, how we will calculate the current, we will इस सर्किट से करंट कैसे निकालेंगे, ये तो कंडक्टर है, तो VI is equal to VS divided by R. So what will be the power across this switch? Because the P is equal to VI and voltage is 0 here, so the power is again 0. So or we can also write P is equal to I square R. Here I is maximum, but resistance is 0, so voltage is 0. So what we have seen के ideal switch में power loss is 0 है. That's not a problem. That's a good thing. But we never have an ideal switch in our life. So we have to move from ideal switch to the practical switch. अब हमें practical switch के बारे में power losses पता करने हैं. How you will do? We will use the same method. Practical switches में क्या होगा यहाँ पर? Practical switch में we will replace this by a transistor. Okay, we will replace this by a transistor. So in the next slide, this is the practical switch. Here we replace the ideal switch by a transistor. जब transistor के base में 0 volt होंगे, let's suppose this is an NPN transistor, as symbol also says that this is an NPN transistor. So when the base is 0, the transistor is off. The transistor off है तो it looks like an open circuit. यहाँ पर voltage कितने होंगे? Collector to emitter voltage maximum होंगे, ये supply voltage. And current कितना होगा? क्योंकि transistor is off है. But this is not an ideal switch. This is not an ideal switch. यहाँ पर एयर गैप नहीं है, यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स के कलेक्टर टू एमिटर ये मटेरियल मौजूद है. इस मटेरियल से कितना करंट फ्लो होगा? When the transistor is off, the current flow will be I leakage. We know about this one. So when the transistor or the diode is off, there must be a leakage current. ठीक है? So यहाँ पर पावर लॉसेस क्या होंगे? 0 क्या पॉसिबल है? नहीं, 0 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब ट्रांजिस्टर ऑफ था तो सप्लाई वोल्टेज Vs मौजूद है और करंट भी मौजूद है. I leakage current is not 0 as it was in the case of the ideal switch. So how we can calculate the power losses across this switch? Okay, first we have to define there in practical switches there are two kinds of losses. Number one is the conduction losses, and number two is the switching losses. And in this chapter 1, we have to understand very clearly what is the conduction losses and what is the switching losses, how they are important to design an electronics or a power circuit, a small power circuit. So मैं क्या आपको बता रहा था कि there are two losses in practical switches. Number one is the conduction, number two is the switching losses. First, the conduction losses यहाँ पर कैसे निकलेंगे? When the transistor is off, it carries a leakage current I leak. Off तो है लेकिन leakage current है. The power loss associated with the leakage current, तो power loss due to this leakage current कितना होगा? P is equal to VI. वोल्टेज कितने हैं यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर पे? Vs. I कितना है? I leak. तो अगर मैं इसके एवरेज पावर लॉस निकालना चाह रहा हूँ, as we have done these things in this chapter, so this is the just equation for the power loss. P is equal to VI. But because this is related with the square wave pulse generation circuit, it's a PWM circuit. You will have on cycle, off cycle, on cycle, off cycle. So we must have to calculate for the off cycle as well as for the on cycle. So for the off cycle, Vs is equal to I leak, and average कैसे निकलेगा?
आप इस ऑफ साइकिल को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे टी ऑफ से, बिकॉज वी नीड टू कैलकुलेट एवरेज, तो आप टोटल टाइम से आप डिवाइड कर देंगे, राइट। In power electronics, I leakage is very less than the main current. कैसे? अगर ये power electronic circuit है तो it's just normal to have flow of about 100 amperes. So although the 100 ampere is just average, it can be thousands of amperes, 2000 amperes, it can be. So if this is a power electronic circuit, and suppose if the current is 100 amperes, and the leakage current can be in the range of the milliamperes or less. So if the leakage current is 1 milliampere and the conduction current is 100 ampere, so of course 100 compared to the 100 amps, the leakage current 1 milliampere of course is negligible in the power electronic circuits only, but not in for the signal amplification or for this or the signal small signal analysis. It's not, because it's a power, so it has to carry high voltage and high current. So such a small amount of leakage current is ignorable. In power electronics, the I leakage is very less than collector current here. So in majority of the cases, power off is ignored. Now the time, so what we have calculated, the conduction losses during off time. This is the conduction loss during the off time. Now we have to calculate the conduction losses during the on time. When the transistor is on, you can see here high pulse from the PWM is given to the base terminal. So the base terminal has high pulse and the transistor will turn on. For the practical transistor, when it turns on, it has a voltage of 1.2 or 1.5 or 2 voltage. And this voltage is known as collector to emitter saturation voltage. As we know, for the diodes, for the silicon diode, the voltage across the diode when it is turned on is about 0.6 or 0.7 volt. Similarly, when this transistor is turns on, इसके क्रॉस भी वोल्टेज होते हैं 1.2 से लेकर के somewhat about 2 volt. And this voltage is known as collector to emitter saturation voltage. So what we know, when this transistor is on, we have voltage across this one, and we have, yes, because this is on, we have also big amount of collector current. So the power there will be a power across the switch. So what is the power? What is the power across the switch when the transistor is off? We have calculated this way. And what is the power across the switch when the transistor is on? We have to calculate this one. So power on P is equal to VI. What is voltage here? Collected to emitter saturation voltage, and the current is this one, IC. This is IC. And again, to calculate the average, we have to divide by time on by total time. So we end up with this. So we get equation number 1.3 and 1.4. Yes, in this book, I think this part is described first. So that's why this equation is given 1.3, and this part is described later on. So this was given 1.4, but it does not make any difference. I describe first for the off period and then for the on period. So this is, so equation number 1.4 or 1.3, you should remember these are the important equations, and these can be used for the calculation of the conduction losses.
So you know about, now you are familiar with the conduction losses. What is the conduction losses? The conduction losses is the losses when the practical switch is off or when the practical switch is on. So in either of the case, in both the cases, there exist power losses, but the power loss because of leakage current is negligible. Okay. So the main power loss is because of this on period. If the transistor is on, there is a main power loss because it has 1.2 volt or 1.5 volt, and there's the maximum current. Okay, so these equation 1.3, 1.4 are important. If you have any question, you can ask. Okay, now it's time, as I discussed, there are two kind of practical the losses across the practical switches. Number one is the conduction losses, as we did this one, and number second type of losses is the switching losses. And this is really very important for the DC-DC converter. Switching losses in the, okay, I again describe the switching losses for the ideal switch. I don't know why I want to explain more and more, because it takes more time. It takes more time to prepare the lectures, but I don't know. Okay, maybe I think कि first हम आपको अगर switching losses पढ़ाना चाह रहे हैं in practical switch में, practical switches में, तो first you should know the switching losses in the ideal switch. It's good to have this stuff first. So again, I took ideal switch. Okay, switching losses. The ideal switches instantaneously turn on and turn off. मिसाल के तौर पर अगर ये आइडियल ट्रांजिस्टर है, so the moment we give base terminal a 0 voltage, instantaneously the same, without any delay, the transistor will turn off. Similarly, for the ideal transistor, when the moment we give this signal, high signal to the base terminal, at that moment, exactly at that moment, means without any delay, the transistor will turn on. But this never happens, because these are not the transistor, the practical switches. ऐसा नहीं होगा कि जब मैंने बेस करंट दिया और उसी वक्त ये टर्न ऑफ हो गया, जब मैंने बेस करंट आपको दिया है और उसी वक्त ये turn on. It's not possible. It will, in reality, it will not immediately, it will not instantaneously, it will not simultaneously turn on and turn off, but it will turn on and turn off after a small finite amount of time delay. तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम डिले के बाद ये ऑन और ऑफ होंगे. Okay, so because I have mentioned here switching losses in the ideal switches, so first we go through the ideal switch. Ideal switch में क्या है कि when the switch is off, वोल्टेज कितने होंगे? मैक्सिमम होंगे. जब ये स्विच ऑफ है, वोल्टेज कितने होंगे? यहाँ पर ये स्विच ऑफ है, वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज हो जाएगा. ठीक है. Okay, that's why it is at high level. When the switch is on, ideal switch में, because please remember this is ideal switch. So ideal switch में जब स्विच ऑन होगा, ये स्विच ऑन होगा, तो ये इसके क्रॉस वोल्टेज 0 हो जाएंगे. ओके, आइडियल स्विच में करंट कितना होगा? जब व्हेन द स्विच इज ऑफ, व्हाट विल बी द करंट? क्योंकि आइडियल स्विच है, स्विच ऑफ है, यहाँ पर कोई लीकेज करंट नहीं है, आइडियल स्विच है, तो यहाँ पर करंट 0 होंगे. व्हेन द स्विच इज ऑन, करंट यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएंगे. तो थिंग्स आर कंटिन्यू. एंड व्हाट वी हैव शोन हियर डेलिबरेटली, कि जैसे ही यहाँ पर ये तो स्विच ऑफ था, आपने इस पॉइंट पे बेस का सिग्नल आपने कनेक्ट कर दिया.
when you connected the base signal at this point, immediately, without any time delay, it directly turns on. So this is the property of the ideal switch. Similarly, when the switch was on and now we want to turn it off, जैसे ही मैंने यहाँ पर बेस करंट 0 किया, instantaneously it turns off. So this is the, ये जो line है ना, sharp line, immediately this indicates the ideal switching losses. इसी तरह से for same is true for the current. जैसे मैंने on किया, sorry, off से मैंने on किया, at that moment, exactly at that moment ये on हो गया. That's not, it is not possible. So this is the property of the ideal switches. Now we have to calculate the power losses across the ideal switch. Power loss इस ऑफ पीरियड में वोल्टेज कितने हैं, मैक्सिमम है, करंट कितने हैं, मिनिमम है, सॉरी 0 है. So the losses will be, you can see the losses is 0. यहाँ पर losses क्यों 0 है, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज 0 है, करंट मैक्सिमम है, losses 0. Again things is continuing. So this is the explanation of the switching losses but having ideal transistors. Once again, what I'm saying, in ideal transistor, when you turn on the device, it immediately turn on. But in practical transistor, when you turn on, it will not sharply act like this one, but it will slowly and gradually it will turn on. ऐसे नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ये slowly ये turn on होगा इस तरह. इसके बाद on हो जाएगा, फिर आपने जो ऑफ करना है तो immediately ऑफ नहीं होगा, बल्कि ये slowly and gradually it will take. So this amount of time, this is known as the delay time, and this delay is always exist in the practical switches. I have not shown here delay because I am just considering the ideal switch. Now come to the main topic, and the main topic is switching losses in the practical switches. So the switching losses in the practical switches while ignoring conduction losses. Okay, I told you there are two losses. Number one is the conduction losses, and number two is the switching losses. Conduction losses we know. मैं तुम्हारा पीछे चला जाता था थोड़ा सा आपको. Conduction losses हमें पता है, इस तरह के conduction losses. And switching losses, conduction losses किस वजह से? When the transistor remains on or when the transistor remains continuously off. This is the conduction losses. But switching losses when the transistor is being turned on or when the transistor is being turned off. So this small delay is accountable for the switching losses. We will see it clearly. This topic is really very important, and yes, is very important in all respects. So please go through this one and please try to understand my material, my slides, and you have to follow the book as well. You can try some other online resources, reliable online resources. Not every resources, not. So now, अब हमें क्या करना है? Switching losses in the practical switches. So first we consider the conduction losses. उस वक्त हमने switching losses को discuss नहीं किया. अब हम क्या करना चाह रहे हैं? Now this time we are trying to understand switching losses, but at this time we are ignoring the conduction losses. Why it is? In practical circuits, the conduction losses will also there. At the same time, the switching losses will also exist. So it cannot be possible कि भाई switching losses है तो conduction losses नहीं होंगे, नहीं. While during the operation of the transistor circuit of the DC-DC converter, there will always be the conduction loss and the switching losses.
लेकिन for the sake of simplicity, I first explain the conduction losses independently. Now I will explain the switching losses independently, means ignoring the conduction losses. When I will complete this one, then we will try to understand simultaneously, we will try to draw the waveform of the switching losses and the conduction losses. Okay. So first this one, remember we have to ignore the conduction losses. What we have, I told you कि in switching losses ये ट्रांजिस्टर इस वक्त ऑफ है, ठीक है. अब आप इसे ऑन करना चाह रहे हैं तो ये इस तरह ऑन नहीं होगा, बल्कि it will have this ramp, downward ramp. So this is the ramp. It means कि ये आपने इस पॉइंट पे सिग्नल प्रोवाइड किया है गेट को to turn on the transistor, but at this point it will not turn on. It will take this small amount of time. Probably I have exaggerated this time because as compared to this one, normally this time is very less. Normally this time is in milliamperes, sorry, millisecond, and this times in microseconds. So that if I draw a microsecond, probably I will not be able to show you the, this small amount of time. So this is just exaggeration in order to clarify that there is a time delay, and I can see this time delay. When you initiated the base current, the transistor will turn on by taking this small amount of time, and this will remain turn on. इसके बाद आप इस पॉइंट पे शायद आप ये चाह रहे हैं कि नेक्स्ट साइकिल आ गई है और इस नेक्स्ट साइकिल के लिए, या आप ये चाहते हैं कि इस नेक्स्ट साइकिल में ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाए. तो पहले ये ऑफ था, ऑफ से मैंने ऑन किया. अब ऑन के बाद ऑफ करेंगे तो ये इमीडिएटली इट विल नॉट एक्ट एज अब्रप्टली instantaneously, बल्कि it will again have a small ramp. Like इस ramp it will have some time delay, so you can see it. अच्छा, पहले हमने पहले इसको थोड़ा सा और फोकस किया and give this this ये जो पीरियड है, this is switching on time delay. It's a transition time. ठीक है. अच्छा, ये स्विच ऑफ था, ये स्विच ऑफ ऑन टाइम है. स्विच ऑन टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक है और डिले टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक. I will clarify this one. Again, I have this one. I think थोड़ा सा ये नीचे हो गया, but it should be of same level. So this is the at this point पे अब आप इसे ऑन से ऑफ करना चाह रहे हैं तो there will be this delay time. So now this area, this is switch time delay, and this is known as switch on time delay. Why it is switch on? Why? Because the switch was previously off and now you want to move from off to on state. इस वजह से ये हम क्या करें, क्योंकि at this point you turn on the base current ताकि ट्रांजिस्टर ऑन हो जाए. So that's why this time is known as switch on time delay, और इसे क्या कहेंगे, switch off time delay. तो ये हमने we have drawn the voltage waveform. जब स्विच ऑफ होगा तो वोल्टेज कितने होंगे, मैक्सिमम होंगे सप्लाई. ठीक है. और जब स्विच ऑन है वोल्टेज 0 है. हमने यहाँ पर जो कि कंडक्शन लॉसेस को इग्नोर किया है, इस वजह से यहाँ पर वोल्टेज 0 लिया. राइट. अब आपको ड्रॉ करना है, पहले आपने वोल्टेज वेवफॉर्म ड्रॉ किया, नाउ यू वांट टू ड्रॉ द करंट वेवफॉर्म. So when the switch is off, the current will be 0 because I have to ignore the conduction losses.
कंडक्शन लॉसेस आपने इग्नोर कर दिया है। अगर मैं कंडक्शन लॉसेस इग्नोर नहीं करूंगा तो क्या होगा, ये जो जब स्विच ऑन है, सॉरी जब स्विच ऑफ है तो इसके क्रॉस वोल्टेज Vs है, और जब और यहाँ पर लीकेज, इस दौरान लीकेज करंट होगा तो करंट विल नॉट बी जीरो, दिस विल बी लीकेज करंट। और ये जो रेड लाइन है इसे थोड़ा सा मैं ऊपर उठा दूंगा, यहाँ पर उठा दूंगा, एंड आई विल राइट दिस एज अ आई लीकेज करंट, क्योंकि ऑफ टाइम में लीकेज करंट फ्लो कर रहा है, फ्लो करता है। बट बिकॉज वी आर इग्नोरिंग द कंडक्शन लॉसेस, हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने जीरो कर दिया। आई विल एक्सप्लेन इट लेटर ऑन, so you will understand fully, don't worry, but focus on the stuff which is presented so far to you and being presented to you. Okay, अब यहाँ बताएं क्या होगा करंट। सर यहाँ पे ग्रेजुअली अपवर्ड जाएगा करंट, अपवर्ड जाएगा, वेरी गुड। सो करंट विल गो अपवर्ड एंड दिस विल बी, दिस इज द ट्रेंड। यहाँ पर ये आपके पास ये जो करंट है, दिस इज द सोर्स करंट, मैक्सिमम करंट है, ठीक है। Okay, that's good. I hope everyone is having this understanding. What you have answered me, everyone have the same answer and same level of understanding. That's good. Now हमने वोल्टेज वेवफॉर्म ड्रॉ कर लिया, अब आपने करंट वेवफॉर्म भी ड्रॉ कर लिया, तो आपको क्या करना है, लॉसेस निकालने हैं, पावर निकालने हैं। अब आपको नेक्स्ट वेवफॉर्म पावर की ड्रॉ करनी है। एंड व्हाट इज पावर? पावर इज बेसिकली क्या होगा, इस वोल्टेज को इस करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर निकल जाएगा। Power losses, यहाँ पर why the power losses is zero, because this is maximum voltage and this is current, I assume zero, so this will remain zero. Similarly, for this on period, current voltage यहाँ पर zero है, current maximum है, so the voltage will be power loss will be zero, and the things will continue for the next cycle. So this is यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल बना है। तो ये हमने, ये टी ऑफ टाइम है। व्हाट इज टी ऑफ टाइम? अच्छा, एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बाद में। प्लीज पे अटेंशन टू दिस सच टाइप ऑफ सबस्क्रिप्ट्स एंड द नोमेनक्लेचर। यहाँ पे देखें कहीं स्विच लिखा हुआ है, कहीं डब्ल्यू लिखा हुआ है, यहाँ पर डब्ल्यू नहीं लिखा हुआ। तो दिस इज टाइम फॉर द ऑफ पीरियड व्हेन द ट्रांजिस्टर वाज ट्रूली ऑफ। तो ये टी ऑफ टाइम है, और टी ऑफ टाइम में पावर कितने होंगे, जीरो होंगे। ये जीरो है तो पावर जीरो, दैट्स राइट। दिस इज द टी ऑन टाइम एंड दिस टी ऑन टाइम में पावर जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि वोल्टेज यहाँ पर जीरो। हमने इस वोल्टेज और करंट वेवफॉर्म को मल्टीप्लाई करके हमें पावर का कर्व निकालना है। दिस इज सेम हियर। अब आप ये देखें कि the maximum, this is the, ये transition period है, and in this transition period from here to here the current voltage always exists, but it decreases, but it exists. Similarly, for this transition period current always exists, although it starts from 0 to maximum value, but for this duration of the time the current always exists, and for this duration of time the voltage always exists. इसका मतलब ये हो गया कि इस पीरियड में वोल्टेज भी है, इस पीरियड में करंट भी है, तो देयर विल डेफिनेटली पावर लॉस। यहाँ पर पावर लॉस एट ईच पॉइंट, वोल्टेज है करंट है, मल्टीप्लाई किया, एक पॉइंट यहाँ ड्रॉ कर लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया, तो वी विल हैव power loss during this time duration for this total time duration we will have power loss. So how the power loss? Okay, यहाँ पर why it is point, because the supply voltage was Vs, this was the maximum supply, and on the middle of this line we are assuming this just a straight line.
So on the middle of this straight line, the voltage level will be half Vs. voltage Vs है, यहाँ पे half Vs है, ठीक है। इसी तरह से करंट यहाँ पे मैक्सिमम है, तो at this point the current will be half, right? So what happens if इस वोल्टेज को और इस करंट को आप मल्टीप्लाई करेंगे और एक पॉइंट निकालेंगे, फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे, एक पॉइंट निकालेंगे, so when you draw the resultant you will end up with this kind of waveform. It looks like half wave rectified waveform है ये, ठीक, it looks like half wave sinusoidal voltage, right? So why यहाँ पर ये देखें जो पावर लॉस मैक्सिमम है, similarly for this one, for this transition period. अच्छा, if you are wondering how we get this shape, it's very easy to verify. आप कोई भी वैल्यू ले लें, एक कोई वैल्यू एज्यूम कर लें, वोल्टेज ले लें 0 से 10 एम्पियर, सॉरी वोल्टेज ले लें 0 से 100 वोल्ट, करंट ले लें 0 से 10 एम्पियर, और इस तरह से आप स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको ड्रॉ करें और इन दोनों पॉइंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल सी जो रिजल्टेंट आएंगे उनको आप ड्रॉ करेंगे, यू विल हैव दिस काइंड ऑफ वेवफॉर्म हियर, you will have this kind of waveform here too. So it looks like half wave rectified voltage waveform. And the peak value, the maximum loss is at this point. This is the center point. And this center point means the peak value is basically the product of the peak current, sorry, half of the current and the product of the half of the total voltage. तो ये जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट पे वोल्टेज कितने हैं, हाफ है, इस सेंटर पॉइंट पे वोल्टेज करंट कितने, हाफ है। सो जब इन हाफ वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल एंड अप विद दिस पीक वैल्यू. सो द पीक वैल्यू इज दिस वन. सो दिस इज this dotted line is drawn here in order to indicate the switching maximum losses. Basically, this curve is the switching losses. This curve is the switching losses. Here, the maximum loss is power switching, maximum switching loss, maximum power loss across the switch. Okay, if you have any question, we continue now. So this is known as. Sir, spikes नहीं बनेंगे, spikes accurate spikes नहीं बनेंगे. Accurate spikes sir नहीं, स्पाइक्स नहीं बनेंगे, ये इस तरह की वेवफॉर्म बनेगा, ठीक है. यस सर, थैंक यू. एक्सक्यूज मी सर, ये रिपल्स आएंगे ना इसमें हल्के हल्के, क्योंकि वो हर जगह चेंज हो रहा होगा. मैं नहीं समझा. मतलब सर वो जो रिपल्स आते हैं हल्के हल्के से, रिपल्स किसके, मतलब जब सब मल्टीप्लाई करते हैं, आउटपुट वेवफॉर्म की बात कर रहे हैं, किसी भी रेक्टिफायर की. जी यस सर, मतलब सर ये जो ये इसमें स्विच ऑन है ना सर पावर का, तो जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो वो हल्के हल्के से रिपल्स बनेंगे ना सर, मतलब कि हर जगह वो चेंज हो रही है. नहीं, हाँ ऑफ कोर्स ये पॉइंट आप अगर ऑसिलोस्कोप बात सुने, ऑसिलोस्कोप में देखेंगे तो ऑसिलोस्कोप इतना फास्ट होता है कि आपको कोई पॉइंट भी नहीं रहा, आपको फौरन ये ड्रॉ कर देगा. ये वेवफॉर्म सही सर, ऑसिलोस्कोप इतना फास्ट है. बट इन रियलिटी क्या होगा, ये पहले ये पॉइंट आएंगे, इतने वोल्टेज होंगे स्विच के क्रॉस. अगर ये फॉर एग्जांपल 8 वोल्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो भी करंट है, इस वोल्टेज को करंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पहले ये पॉइंट बनेगा, फिर ये पॉइंट, फिर इट्स वेरी टाइनी पॉइंट्स. इस तरह से पॉइंट आपके स्लोली एंड ग्रेजुअली बनेंगे. लेकिन when you watch across on the oscilloscope, तो आपको ये कंटिन्यूस कर्व नजर आएगा, बिकॉज दे आर वेरी फास्ट. आप यही कह रहे हैं या कुछ और कह रहे हैं? What is ripple? You cannot use. Okay. Yes, sir. I think we cannot use the ripples here, because ripple is used for the output waveform,
where you have to maintain, for example, अगर आपको output waveform, output voltage अगर आपको 10 वोल्टेज मेंटेन करने हैं, तो उसमें क्या होगा, चलिए लेट्स सपोज, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये आउटपुट वोल्टेज है, ये आपके पास आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है ना। सो ये एक्चुअली आउटपुट वोल्टेज इस तरह नहीं बनेंगे। अगर इफ यू आर टॉकिंग फॉर द रिपल्स, तो आउटपुट वोल्टेज तुम्हारे जो बनेंगे वो इस तरह बनेंगे। तो आउटपुट वोल्टेज आपके इस तरह नहीं, थोड़ा सा ना इसमें ना रिपल्स होंगे, इस तरह से बन जाएंगे, ठीक है। बस मेरे पास वो माउस भी नहीं है, ये मैं वो पैड इस्तेमाल कर रहा हूँ, इट्स नॉट गुड रेजोल्यूशन। सो इस केस में जब आउटपुट वोल्टेज है ना, अगर आपको 10 वोल्टेज मेंटेन करना है, so this things which fluctuates is known as the ripples. यहाँ पर nothing is, we cannot use the word ripple here, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो ट्रांजिस्टर जो स्विच है उसके क्रॉस हम पावर लॉस निकाल रहे हैं, and the power loss we are focusing only during the on time, not on time, it's the on transition time. On time तो आपके पास ये है, ये on time है और ये off time है। We should not use the word off time and on time, बल्कि हम यहाँ पर transition time है। This is the reason why you should, ये बहुत अच्छा अपने टाइम पे क्वेश्चन किया है, देखें। दिस इज द रीजन कि यहाँ पर मैं इसको पहले निकाल दूं, ये जो चैप्टर है इट्स वेरी इजी, almost we don't have any mathematics here, but as far as the true symbols and the subscripts are involved, you have to be very careful. सर ये ट्रांजिशन है, जी सर ये ट्रांजिशन टाइम है सर। सर ये लीनियर ही होगा सर। For the sake of simplicity, it is linear, yes. चूंकि हम कोई रिसर्च नहीं कर रहे, हम जो है ना, आपको जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाई जा रही है वो बहुत हल्की पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाई जाती है, बिकॉज यू हैव नॉट, आप अंडर ग्रेड्स के स्टूडेंट है ना, तो we always try to assume something for the sake of the simplicity. So of course it is, अगर आप ऑसिलोस्कोप में देखेंगे, you will not find this linear, but it's almost approximate to linear, what I will say. I cannot say it's linear, but yes, we are assuming कि ये linear transitions हो रही है, right? ओके सर। अच्छा, अब मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूँ, देखें, ये देखें, you have to आपको इस दो टाइम में बहुत ज्यादा क्लियर, एग्जाम में बच्चे बड़ी गलतियां करते हैं यार, नालायक बच्चे समझते नहीं, जब पढ़ाया जाता है उसको फिर बाद में एग्जाम में गलतियां करते हैं, फिर वो बहुत सारी मुझे मुश्किल होती है। देखिए, आई डोंट केयर टू रिड्यूस द मार्क्स, आई डोंट केयर टू इंक्रीज द मार्क्स। जो भी बच्चे प्रेजेंट करते हैं मैं उसके मुताबिक मार्क्स देने की कोशिश करता हूँ। ओके, सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट हियर कि ये देखिए, यहाँ पर टी ऑफ लिखा हुआ है सिर्फ, ठीक है, या यहाँ पर देखें ये टी ऑन लिखा हुआ है, इस जगह टी स्विच ऑन, तो दिस इज द डिफरेंस। दिस स्विच मींस स्विचिंग टाइम, स्विचिंग टाइम है ये। ऑन ये तो स्टैंड स्टिल है ना, हियर ऑन है तो ऑन ही है, ऑफ है तो ऑफ है, ठीक है ना। दिस इज द ट्रांजिशन टाइम।
तो आपको इसकी जो सबस्क्रिप्ट है ये लिखना पड़ेगा। अगर आप ये मेंशन कर रहे हैं तो टी स्विचिंग ऑन, स्विच ऑन क्यों है, इस ये ट्रांजिस्टर ऑफ से ऑन की तरफ आ रहा है, इस तरह से ये स्विच ऑन है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर सिर्फ टी ऑन लिखा हुआ है, मींस दिस इज द परमानेंट ऑन टाइम है, दिस इज नॉट द ट्रांजिशन टाइम, right? So you must have to be careful not to mix or not to be confused with this different subscripts. अच्छा, अब यहाँ पर we will see soon कि यहाँ पर जो एवरेज पावर लॉस है, ये तो कर्व है, साइनोसॉइडल कर्व है, यहाँ पर मैं एवरेज कैसे निकालूंगा? Equation for the average power curve is 1/6 VSIS। अब ये देखें यहाँ पर हाफ VS है, हाफ 1/2 VS, 1/2 IS, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 VS और IS तो आ जाएंगे, 1/4 VS IS। जब आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे probably it will become 1/6 VS IS। So the switch on power loss, switching on power loss is calculated by 1/6 VSIS। अब इस पीरियड की स्विचिंग लॉस कैसे निकालेंगे? Just multiply this voltage by this current and you will end up this one. But we have to use this formula for this sinusoidal half wave rectified waveform. सिमिलरली यहाँ पर आप देखें टी स्विच ऑफ लिखा गया है, दिस इज ये रैंप यहाँ पर भी है, रैंप यहाँ पर भी है, तो दिस एंड ऑफ कोर्स फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी वी विल अस्यूम ये स्विच ऑन टाइम इक्वल्स टू स्विच ऑफ टाइम, बट इन रियलिटी इन प्रैक्टिकल ये दोनों टाइम डिफर्स करते हैं। वी विल सी सम एग्जांपल कि जहां पर ये टाइम कुछ और होगा, ये टाइम कुछ और दिया हुआ होगा, बट फॉर द मेनी केसेस, फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द केसेस वी जस्ट इन दोनों टाइम को बराबर लिया जाता है। नॉर्मली दिस टाइम इज लॉन्गर देन दिस टाइम। लेट्स सी व्हाट्स मोर। सो चूंकि हमने अस्यूम किया कि ये दोनों सेम है, तो स्विच ट्रांजिशन टाइम पे स्विच ऑन का ये इक्वेशन है और स्विच ऑफ के लिए भी ये इक्वेशन है, सेम इक्वेशन for the on transition time and same equation for the off transition time. अच्छा, अब इन चीजों को थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया है कि ओके यू विल गो थ्रू दिस। ये मतलब सिंपली चीजें लिखी हुई है कि स्विच ऑन होगा तो वोल्टेज आइडियल में क्या होंगे, वोल्टेज 0 होंगे, करंट मैक्सिमम होगा, ये सारी चीजें लिखी हुई है। So during the transition period, so T switch on and T switch off, there exist both current and voltage across switch, thus it has a power loss. ये बताइए रहे कि यहाँ पर चूंकि इस पीरियड में करंट भी एग्जिस्ट कर रहा है, वोल्टेज भी एग्जिस्ट कर रहा है, वोल्टेज भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर पावर लॉसेस मौजूद हैं। So what is the maximum switching power loss? Maximum switching power loss is at this point. कहाँ पर? इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे वोल्टेज कितने हैं? This point is basically maximum switching loss. यहाँ पर वोल्टेज कितने हैं? हाफ VS, करंट कितना है? हाफ IS। तो मैक्सिमम वोल्टेज कितने निकल जाएंगे? मैक्सिमम पावर लॉस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। ये यहाँ पर चीजें लिखी हुई है कि switching on maximum power loss is equal to 0.5 VS, 0.5 IS. But for the average value, ये वैल्यू किस तरह से? ये साइनोसॉइडल वैल्यू ना, इस तरह से हाफ वेव रेक्टिफाइड साइनोसॉइडल। आपने साइनोसॉइडल वेव फॉर्म में आपने स्टडी किया होगा कि इसकी RMS वैल्यू भी निकलती है। RMS वैल्यू के लिए 0.707 से मल्टीप्लाई करते हैं पीक वैल्यू को। If you want to get the RMS value from the sinusoidal voltage, तो आप पीक वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? कांस्टेंट 0.707 से, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको एवरेज निकालना है, here the power curve looks like a half wave rectified sine wave,
Thus average value of this power loss is, एवरेज के लिए 0.637 से मल्टीप्लाई करेंगे, पी स्विच ऑन मैक्सिमम, यानी कि पीक वैल्यू को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.637, पीक वैल्यू कितनी है 0.5, दिस इज द पीक वैल्यू, इस पूरी वैल्यू को अपने 0.637 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई यू विल अप्रोक्सीमेट दिस इक्वेशन, दिस वैल्यूज विल बी अप्रोक्सीमेटेड 1/6 VSIS. Sometime I ask क्वेश्चन कि आप ये इक्वेशन एग्जाम में कि ये जो है ना ये आप डिराइव करें, तो जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं किया होता या लेक्चर अटेंड नहीं किया होता, या स्लाइड्स, वो पता नहीं इस डेरिवेशन को पता नहीं क्या समझते हैं क्या नहीं समझते हैं, वो इस इक्वेशन को छोड़ देते हैं एंड उनके मार्क्स फिर नहीं मिलते। लेकिन जिन्होंने स्लाइड या लेक्चर से अटेंड किया होता है वो, इट्स वेरी सिंपल, आप ये सारी चीजें लिखते हैं, वेव फॉर्म बना दें। आपको अगर ये ड्राइव करने कहा जा रहा है, आप क्या करेंगे, आप पावर लॉस का जल्दी से अगर पूरा बना सकते हैं तो पूरा बना दें, नहीं तो स्विचिंग लॉसेस की ये वाली लास्ट वेव फॉर्म बना दें। ये स्विचिंग लॉसेस की जो शेप है वो ऐसे होती है। अगर आप सब बनाते हैं जल्दी जल्दी बना दें, हाथ से फ्री हैंड से पेंसिल से ड्रॉ कर लें, जो भी कर लें, तो आप ये वेव फॉर्म ड्रॉ कर दें और उसके बाद यहाँ पर ये शो कर दें कि दिस इज 0.5 VS, दिस इज 0.5 IS। उसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ जंप कर जाएं। पी स्विच ऑन मैक्सिमम कितना है, इस पॉइंट पे, सेंटर पॉइंट पे ये है, और चूंकि हियर द पावर कर्व लुक्स लाइक अ हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव, thus एवरेज वैल्यू ऑफ दिस पावर लॉस इज, क्या करेंगे, एवरेज के लिए 0.67 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आरएमएस के लिए 0.707, बट हमें सिर्फ एवरेज चाहिए, ठीक है ना। तो 1/6 VS, चूंकि 0.707 से ना ये इतना खूबसूरत फॉर्मूला नहीं निकलता है। दिस लुक्स ब्यूटीफुल इक्वेशन एंड दिस इज वैलिड for the transition time only, on time and off time, ठीक है। So we just okay, इस एग्जांपल 1.5 कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा 5 मिनट्स का ब्रेक ले लेंगे। Example of 1.5, calculate average switching loss at a switching frequency of 1 kilohertz. For simplicity, ignore conduction losses. They only interested in the switching losses, conduction losses की कह रहे हैं, इसकी बात ना करें, आप conduction losses 0 समझें। So this is the off time, this is the on time। अच्छा, डेटा इन्होंने दिया हुआ है, VS is equal to 120 volt, RL is 6 ohm। Assume क्या है कि ये T switch on means ये transition time है, switching on time equals to switching off time, and it is given to you 1.5 microsecond. It should be noted that T switch on and T switch off are generally not equal in practical circuit. किसी ने भी क्वेश्चन किया था कि दोनों वेवफॉर्म एक जैसे या रिपल्स होंगे या जो भी होंगे, तो इन द फैक्ट इज कि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, बट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, जैसे किसी ने क्वेश्चन किया था, तो मैंने कहा था हम चूंकि वी आर जस्ट अंडरग्रेड स्टूडेंट, वी आर नॉट डूइंग एनी हाई लेवल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की रिलेटेड हम कोई रिसर्च नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग एनी practical any hi-fi things, so just we will rely on the fundamental assumptions and we will go through. तो यहाँ बता दिया है कि T switch on equal to T switch off, which is equal to 1.5 microsecond, but it is also stated in practical, so you should know कि practical switch में ये बराबर नहीं होते हैं। We know from previous slide, आप सिर्फ आपसे क्या पूछा गया है कि switching losses निकालें। switching losses की equation क्या है? We know switching losses 1/6 VS/IS, ठीक है। यहाँ पर VS और IS are actually maximum supply voltage and maximum supply current है। So I have not calculated independently, but I have done here in the same sentence. Switch on average कैसे निकलेगा? 1/6 VS/IS। ये एवरेज की क्यों लिखा है? क्योंकि we multiplied by 0.637। ओके, 1/6 VS/IS की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? चूंकि IS की वैल्यू यहाँ पर ये होगी करंट थ्रू द ट्रांजिस्टर और करंट थ्रू द रेजिस्टर,
It's easy to find the current through the resistor. इस resistor के cross कैसे हम करंट निकालेंगे? IS इस वोल्टेज को यहाँ पर वोल्टेज को माइनस कर देंगे तो डिफरेंशियल वोल्टेज डिवाइड बाय R. So differential voltage is Vs और यहाँ पर collected to emitter saturation voltage. Differential voltage divided by R and 1/6 Vs की value 120. It was given. Saturation, okay, because conduction losses are ignored here. जब conduction losses ignored है तो आप यहाँ पर collector to emitter saturation voltage को आप 0 ले लेंगे. And you will end up with this one. So the switch on average loss is 400 watt. That's really very high. सिर्फ loss है ये 400 watt. आप सोचें सिर्फ loss. Okay. Switching on energy निकाला है. Energy loss के लिए क्या करेंगे? Time से multiply करेंगे. Time कितना है? Switch on के लिए निकालने हैं. तो स्विच ऑन से मल्टीप्लाई करेंगे एंड स्विच ऑन कितना है 1.5 माइक्रोसेकंड. नाउ इट्स रीजनेबल वैल्यू कि एनर्जी कितनी है 0.6 मिली जूल. ये वाट तो इतना है लेकिन इट्स ओनली एग्जिस्ट फॉर दिस माइक्रोसेकंड. दिस इज इंपॉर्टेंट. वाट याद रहे बहुत ज्यादा है बट दिस इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट सो मच इन टर्म्स ऑफ द लॉसेस. अगर आपसे कोई वाट, अब आप दिस इज द टाइम टू अंडरस्टैंड and differentiate between the watt and the energy. अक्सर लोग confuse. This is the good example. अगर आपसे कोई watt पूछेगा तो what you will do? You will just calculate and you will see, okay, the watt is 400 watt. But is this really very high? No, because this exists only for this small time. So the energy loss is 0.6 millijoule, and this is not going to damage your transistor. Turn off your mic, please, if you have no any question. Okay, switch off is also equals to switch on. Yes, ये बता दिया इन्होंने. ये दोनों बराबर हैं. तो on के लिए भी 0.6 मिलीजूल्स हो जाएंगे और off के लिए भी 0.6 मिलीजूल. टोटल कैसे निकालेंगे आप? इन दोनों को ऐड कर देंगे. Total energy loss in one cycle due to switching will be total energy loss. अब ये देखें, ये सबस्क्रिप्ट इज इम्पोर्टेंट. यहाँ पर ऑन नहीं लिखा हुआ, सिर्फ स्विचिंग लिखा हुआ है. तो एनर्जी लॉस ड्यूरिंग स्विचिंग ये है. दिस इज द एब्रिविएशन. एनर्जी लॉस, टोटल एनर्जी लॉस ड्यूरिंग स्विचिंग इज इक्वल टू एनर्जी लॉस ड्यूरिंग ऑन टाइम plus energy loss during off time. So it becomes 1.2 millijoule. Average power loss during switching. Average power loss अब कैसे निकालेंगे? Average power loss, this is operating at a frequency of 1 kilohertz. तो आपको ज़ाहिर फ्रीक्वेंसी को तो शामिल करना है. तो switching loss is equal to energy loss multiplied by frequency. 1.2 millijoules frequency. So आपके पास जो average power loss during switching is 1.2 watt. 1.2 watt. अब आप सपोज करें कि अगर फ्रीक्वेंसी बहुत लो है तो ये और भी कम हो जाएगा. अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो probably this will increase and we will see soon. So if you have any question, तो जस्ट टेक, ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि रिकॉर्डिंग भी ऑन है. तो मैं खाली रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ और वी विल जॉइन आफ्टर 5 मिनट्स. यस सर. याद दिला देना मुझे रिकॉर्डिंग ऑन करना. ओके सर.